2024 के अंदर अगर आपको मेटावर्स के स्किल्स नहीं आते, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको मार्केट में सर्वाइव करना। कोई भी ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट या उसकी सर्विसेज उस मेटावर्स के बाद आप डिप्लॉय करके आप अगले अपने कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो। एआई यूज करके आपका टाइम भी बचता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बिकॉज वो $20 में काम आपका हो जाता है। एक टेबल पे 5 बंदे काम कर रहे हैं और आउटरीचिंग कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको एआई यूज करना चाहिए, आपको ऑटोमेशन करनी चाहिए। हर बंदे को एआई के बारे में पता होना चाहिए कि एआई यूज किस तरह करता है। जब एक घोड़ा होता है वो रेस में जब जाता है तो उसके ना लेफ्ट और राइट पे ब्लिंकर्स लगाते हैं ताकि वो अपने रास्ते पे अलाइन रहे और फोकस्ड रहे। Hello, this is Esha Latif. I am Business Development Manager at the Programmers Force. So, welcome to another episode of Invaluable Perspectives. Today, I have Ahmad with us. Hi, Ahmad. How are you doing today? I'm doing great. Thanks for asking. That's amazing. All right. So, in today's topic, we're going to covering the use of Metaverse. We will also be talking about the different tactics in the B2B domain, and we will also be covering the different strategies that can take the lead generation process to another level and exploit the different opportunities for the tech startups. So, all right, Ahmed, so what do you want to say about the role of Metaverse? मेटावर्स जो है वो अब मार्केट में जो है आपको पता है कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री और NFTs मार्केट में कितनी आ चुकी हुई हैं। तो आई थिंक कि 2024 के अंदर अगर आपको मेटावर्स के स्किल्स नहीं आते तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको मार्केट में सर्वाइव करना। तो मेटावर्स के अंदर हम लोग डिफरेंट जो आजकल हमारे नए ब्रांड्स आ रहे हैं, मेटावर्स के लिए नाइक जो था उसने अपने उसके लिए इनोवेशन इस तरह लेकर आया कि जो भी शूज़ ट्राई करते थे उसके लिए आपको फिजिकली नहीं जाना पड़ता था। और ये मेटावर्स का जो बूम आया था वो आया था कोरोना के अंदर, जिसके अंदर आप फिजिकली जाके किसी भी शॉप पे जाके आपको शूज़ ट्राई नहीं कर सकते, बिकॉज आपको डिफरेंट शूज़ ट्राई करने होते थे, आपको फिजिकली जाना पड़ता था। तो उसके लिए मेटावर्स ने यह किया कि आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जिसके अंदर आप वर्चुअली जाके शूज़ ट्राई कर सकते थे। तो आई थिंक कोई भी ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट या उसकी सर्विसेज उस मेटावर्स के बाद आप डिप्लॉय करके आप अगले अपने कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो। तो आई थिंक ये एक ये बहुत अच्छा स्किल है। इसके अंदर गेमिंग इंडस्ट्री, आपको गेम डेवलपमेंट आनी चाहिए, आपको आर्किटेक्चर के सॉफ्टवेयर आने चाहिए, जो ऑटोकैड आता है, स्केचअप होता है। ऑटोकैड पर आप स्केच करते हैं, स्केचअप के ऊपर आप 3D व्यू में लेकर आते हैं। उसके रेंडर्स के लिए आप लूमियन भी यूज़ कर सकते हैं और आप यूनिटी भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर डिप्लॉय होता है Web3GL के अंदर। इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि आपकी जो साइज़ फाइल हो 150 MB से ज़्यादा ना हो। तो उस 150 MB बिकॉज एसेट स्टोर के अंदर से आप कोई भी फाइल पकड़ के जो है वो ड्रैग करके आराम से कोई भी मॉडल बना सकते हैं। तो आई थिंक कि 150 MB की फ़ाइल के अंदर रहते रहते आपने एक मॉडल बनाना होता है जो एक कॉन्सेप्ट और एक आइडिया के बेस पे होता है कि क्यों बनाया जा रहा है। सो मेरा जो एक प्रोजेक्ट था जिसकी मार्केटिंग मैंने इस तरह की थी कि मैंने डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स और जितने भी ब्लॉगर्स वगैरह जो अच्छे जिन्होंने NFTs वगैरह बनाए थे उन सब के NFTs मैंने उसके अंदर एग्जीबिशन पर लगा दिए। तो प्लेटफॉर्म के अंदर मैंने लोगों को डिस्कॉर्ड मार्केटिंग के थ्रू इनवाइट भेजा, और जितने भी वो NFTs वाले लोग थे वो सारे के सारे आए और उन्होंने आके NFT से बाई किया, उसका मैंने कमीशन लिया और मेरी स्पेस भी 2 दफ़ा सेल हुई, जहाँ से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। So you mean to say that not only the growth, it's a very good opportunity as well for the virtual presence and marketing and branding of the products as well. That's amazing. So what do you think about the tech, especially we're talking about the tech space? So how Metaverse is helping just that? How about the tech domain of it? So let's say आपका एक प्रोडक्ट है या आपकी सर्विसेज हैं और उस सर्विसेज की एक वेबिनार बनानी है आपने, या कोई कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होनी है। तो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के हिसाब से आप किसी भी इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट कर सकते हैं। जिस तरह अभी पेप्सी वालों ने अपनी ब्रांडिंग की थी और एक 3D उन्होंने जो है एनिमेशन उन्होंने बनाई और सारा का सारा उन्होंने एक पब्लिसिटी नई इनोवेशन लेकर आए। तो आई थिंक कि आप वेबिनार्स बना के डिफरेंट एवेटार्स के थ्रू जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या ब्लॉगर्स वगैरह हैं वो उस कॉन्फ्रेंस में आए और आके उस स्पेस के अंदर जो है
जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप सेल करना चाह रहे हैं वो स्पेसिफिक जो भी इंडस्ट्री है उस हिसाब से आई थिंक आपको वेबिनार्स वगैरह बनाना चाहिए मेटावर्स के ऊपर. That's amazing. I think that will really expand the scope of their offerings as well. Yeah, exactly. So, all right, Ahmed. So, what do you think about the innovation? Now, just come towards the B2B domain. What do you think that there are innovations that we can be using in the coming future to expand this process, or to just, the traditional cold calling it's very old now. It doesn't give that much result, and it's a lot of like time taking and time consuming. So what can we do to, move towards some other options other than cold calling? I think different strategies आपको आनी चाहिए because आपको automation का बताओ. Let's say कि एक टेबल पे 5 बंदे काम कर रहे हैं और आउटरीचिंग कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको AI यूज़ करना चाहिए, आपको ऑटोमेशन करनी चाहिए जिसके अंदर हम डिफरेंट टूल्स यूज़ कर रहे हैं, हम इंस्टेंटली यूज़ कर रहे हैं instantly.ai, और आपको सारे आप एक टाइम पे like 1,000+ emails भेज सकते हैं, इससे भी ज़्यादा भेज सकते हैं. Exactly, like extracting from Apollo and then using it on instantly. Exactly. That's really helping. Exactly. और इसमें यह है कि आपके जितने भी CRM टूल्स हैं, जिस तरह हम लोग HubSpot यूज़ कर रहे हैं, जीरो होता है, ClickUp वगैरह होता है, तो स्पेसिफिकली जीरो और HubSpot के अंदर आप इंटीग्रेट कर सकते हो read.ai को, जिसके अंदर जितनी भी मीटिंग्स वगैरह हैं और जितनी भी एक कॉल की समरी होती है सारी की सारी ऑटोमेटेड होती है. उसके अंदर ये नहीं होता कि आपको मैनुअली जाके हर चीज़ लिखनी पड़ती है. तो आई थिंक ये हर चीज़ ऑटोमेटेड है और आप चैटबॉट्स बना सकते हो क्यूरीज के लिए. लेट्स से मशीन लर्निंग का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि आप बॉट को ट्रेन करते हो. आप इस यूज़ करके अपना चैटबॉट बना सकते हैं. उसके अंदर जितनी भी क्यूरीज हैं वो सारी की सारी आपने इंसर्ट करनी है, उस बॉट को ट्रेन करना है, और वो बॉट क्या करेगा कि वेबसाइट के ऊपर जो भी आपकी वेबसाइट विजिट करेगा, इनबॉक्स में जो भी आएगा, एग्जैक्टली उसकी क्वेरी का रिप्लाई आपको जो है 24/7 जो है don't have to be on the screen 24/7. Exactly. That's amazing. Also, like now that we know that LinkedIn is it's a lot more complicated now in a sense. There are a lot of restrictions. You can't just go and find out people and reach out to them. You're always facing a lot of restrictions. So to automate the process is very important. And instantly is a very good option. You are outreaching to a massive amount of people in a very less time. Exactly. So time effective to but cost effective bhi hai. Instead of buying new programs or new like features of LinkedIn, you can try different AI options that will help you and expand the process and make it easier. All right, that's amazing. Now, I'm just talking about the tech startups, their products and everything and their services. I think the lead generation plays a very important role in it. Yeah. All right. So what do you think, what are the setbacks if we just stay on one typical, platform? जैसे कि आपने बोला कि लिंक्डइन ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं और हमारी लीड जनरेशन प्रोसेस के अंदर मसला ये आ रहा है कि लीड्स नहीं आ रही बिकॉज हम ग्रुप आउटरीचिंग कर रहे थे. और ऑब्वियसली आप जब एक एल्गोरिथम आई थिंक आपको जो भी है AI के थ्रू AI यूज़ करके जितने भी आपके लॉजिक्स वगैरह होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपने बिहेवियरल पैटर्न्स और कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से लिंक्डइन ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं. तो आई थिंक आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी जाना चाहिए, जिससे आपको वेबिनार्स बनाने चाहिए, आपको ट्विटर यूज़ करना चाहिए जो ट्विटर एक्स बन गया. सो आई थिंक आपको इंस्टा यूज़ करना चाहिए, आपको स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करना चाहिए, जो बिग प्लेयर्स हैं उनको रीच आउट करें, उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करें. और आई थिंक कि लिंक्डइन के ऊपर मैं पर्सनली 50 लोगों को आउटरीच कर पाता था और सेल्स नेविगेटर भी बाय किया हुआ था. तो आई थिंक कि आपने कॉस्ट इफेक्टिवनेस की तरफ भी जाना है. तो आई थिंक यहाँ पे आपको $50 पे करने पड़ते थे सिर्फ 50 लोगों को आउटरीच करने के लिए. बट आई थिंक कि इंस्टेंटली यूज़ करके या ईमेल मार्केटिंग करके AI यूज़ करके आपका टाइम भी बचता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है बिकॉज वो $20 में काम आपका हो जाता है. आप ईमेलेबल यूज़ करके ईमेल वेरीफाई भी कर सकते हैं. और जिसका अगर एक दिन में आप 50 लोगों को रीच आउट कर रहे हैं तो आई थिंक ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप मोर देन लाइक 1000 प्रॉस्पेक्ट्स को जो है वो रीच आउट कर सकते हैं. तो Okay, Amit, so you talked about, how we should be outreaching to the bigger companies or reputable companies. I think that's very important in especially our domain in business development, because once you have these connections with the bigger companies, it really helps you out there to spread the word out there or to,
take your startup out there, and a lot of people get to know about your company once you have, obviously it helps to boost the revenue as well, but the connections and the word that gets spread out there about you is very important as well. So do you agree with me on that? Yes, I really do, because I think कि अगर आप स्पेसिफिक इंडस्ट्री को रीच आउट नहीं करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और आप कुछ गलत लोगों में टाइम इन्वेस्ट कर रहे होगे. तो आई थिंक आपको स्पेसिफिक इंडस्ट्री के हिसाब से, और आई थिंक आपको यूज़ केस देखना चाहिए कौन सी इंडस्ट्री के हिसाब से उसका यूज़ केस क्या होता है. Exactly. और दैट डिपेंड्स कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो सर्विसेज बेस्ड है या फिर आप सोल्यूशन सेल कर रहे हैं. तो आई थिंक जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो लोग या फिर इनोवेशन की तरफ आते हैं. तो आपने यूएसपी, ऑब्वियसली हमें यूएसपी बतानी पड़ती हैं अपनी. तो आई थिंक वो पार्ट बहुत ज़्यादा जो है ना, I think it's very important because being a salesperson, a lot of times we tend to forget the part that we need to be empathetic towards others. We don't have to sell everything to everybody. Exactly. We need to prioritize their needs, and we need to know कि उन्हें क्या चाहिए. हमें industry specific, use case specific होना पड़ता है. And that's going to bring out more results instead of just selling everything to everybody. That doesn't work. So yeah, it's very important. It's part of the sales process कि आपको, you need to know the next person's needs, and then you need to ask them what do they need, and you just need to figure it out and then sell them what they need instead of just throwing everything on them. And that just really puts them back. Yeah. And that's very important. All right, so as you said that in this startup, in this entire domain, everything is very competitive. We are living in an age where we are not new. Everybody's doing something new. So what do you think, how a startup or how any company can stand out in terms of that? Because in this competitive environment, what do we need to do? What do every department of the company needs to do to stand out? I believe obviously market में saturation जब हो जाती है, एक प्रोडक्ट होता है और एक सर्विसेज होती हैं, मार्केट में saturation आ जाती है, हम सेम सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं. तो आई थिंक कि आपको अपनी पहले यूएसपीज जो है वो क्लैरिफाई करनी पड़ती हैं कि हम लाइक व्हाट सेट्स आवर प्रोडक्ट अपार्ट. तो आई थिंक आपकी यूएसपीज ये होनी चाहिए, आप एक डिफरेंट इनोवेशन के साथ आए, आपकी मार्केट कंपेटिटिव प्राइसिंग होनी चाहिए, और आपने पर्सनलाइज यूजर एक्सपीरियंस भी देखना है, और लाइक कस्टमर की नीड्स को देखना है. It's very important. Like you talked about the competitive pricing. It's very important because obviously everybody out there is looking for something that is cost effective. Exactly. हर किसी को सस्ती चीज़ चाहिए, हर किसी को, लेकिन ये भी चाहिए कि हमें एक अच्छी सर्विस बहुत कम प्राइस में मिल जाए. So cost effectiveness is very important while any startup is working, and obviously something new, USPs. Exactly. Even in the sales department, if you talk about it, if you don't have USPs, you don't know what to sell. Because everybody would come up to you and say that, okay, what's different? All right, we already have that service going on. How are you differentiating, and how are you different from us, and how you're going to cater us in any different way? So I think it's very important to come up with new USPs and come up with, pricing models, different pricing models. For example, there are a lot of pricing models on the go and tier-based system and everything, and that is very important in the startups. If you agree with me. So I think in this entire startup area, we need to really work on our USPs. Yeah. Because as I said, the market बहुत saturated. Every person is doing something that you're already doing. So how are you going to bring innovation in that? That's where AI comes in. Because in past बहुत सी companies हैं, लेकिन वो उनका process अभी तक manual है, उनका process अभी तक automated नहीं है. To bring in that automation, I think is an innovation. Because as we know कि आगे future is all about AI. So what do you think about that? How is AI going to incorporate itself into these new startups? I think AI जो है, हर बंदे को AI के बारे में पता होना चाहिए कि AI यूज़ किस तरह करता है. आपको कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको लॉजिक समझने पड़ेगा, आपको पैटर्न समझने पड़ेंगे. मेरी एक दफ़ा मैंने इंटरव्यू दिया था डेस्कॉन के डायरेक्टर के साथ. उसने मेरे से एक चीज़ पूछी थी कि मार्केट में अगर आप सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, एक सेम सर्विसेज दे रहे हो, तो आप किस तरह जो है फोकस कर सकते हो. बिकॉज जब भी आप मार्केट में आते हो कहते हो ये ऑलरेडी लोग मार्केट के अंदर है, मैं अब क्या करूँगा. तो उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल दी थी कि जब एक घोड़ा होता है, तो जब वो रेस में जब जाता है तो उसके ना लेफ़्ट और राइट पे ब्लिंकर्स लगाते हैं ताकि वो अपने रास्ते पे अलाइंड रहे और फोकस्ड रहे. तो आपने जब भी किसी भी चीज़ पे काम करना है तो आई थिंक आपने उसका एक पूरा एनालिसिस करना होता है, एक मार्केट एनालिसिस करना होता है कि मार्केट में लोग क्या दे रहे हैं और हम क्या नहीं दे रहे. तो आई थिंक AI
डेवलपमेंट आजकल सबको आनी चाहिए, मशीन लर्निंग सबको आनी चाहिए, बिकॉज हर पार्ट के अंदर अगर आप मेडिकल की फील्ड में जाते हैं, आप अगर बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, तो AI बहुत ज़रूरी है, आई थिंक. Yeah, I was going to come there on that point. In the past, the options were so limited. Yeah. You know, you were just studying fewer subjects and you're not doing anything different. But in the future, when it's all going to be about AI, how much do you think the role of these institutes is there to include these subjects like machine learning or AI development or, different parts like these computer sciences? How do you think that thing is very important, and how is that going to shape the startup culture over here? I mean that depends. Because यूनिवर्सिटीज़ की जो डिग्रीज़ की पहले वर्थ थी, डिग्रीज़ की वर्थ थोड़ी सी कम होती जा रही है. अब ज़्यादा लोग, आपका स्किल सेट जितना ज़्यादा डाइवर्स होगा, लोग आपकी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ेंगी. आपने मार्केट में सर्वाइव करना होता है. तो आई थिंक लेट्स से आपको मार्केटिंग के लिए एक डिफरेंट बंदा चाहिए, आपको अकाउंट्स के लिए डिफरेंट बंदा चाहिए, आपको फाइनेंस के लिए डिफरेंट बंदा चाहिए, आपको कॉल्स के लिए डिफरेंट बंदा चाहिए, आपको डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट बंदा चाहिए. तो आई थिंक आपके पास डाइवर्स स्किल्स होने चाहिए. आप अकेले काम कर सकते हो, और वो आपने काम नहीं करना है, आपने AI टूल्स यूज़ करने हैं. फाइनेंस वाला जो पर्सन होगा, या फिर जो प्रोजेक्ट CRM टूल्स होते हैं, हम वो यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर ऑटोमेशन कर सकते हैं, हम जितने भी AI टूल्स उसमें इंटीग्रेट कर दें. तो आई थिंक एक बंदा जिस सारे डिपार्टमेंट्स को सारे डिपार्टमेंट में सर्वाइव कर सकता है अगर उसको AI टूल्स यूज़ करने आते हो. तो इट्स नॉट अबाउट कि आपको कोडिंग करने की ज़रूरत है, आपको लॉजिक को समझने की ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए कौन सा AI टूल मैंने कहाँ यूज़ करना. Yeah. Okay, so as we've been talking about the positive aspects of AI in the business space, do you think any negative aspects of AI in the business space? Do you think it's gonna affect something that we don't need? It's something. मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी, शॉर्ट्स देखे थे, तो उसके अंदर शार्क टैंक, उसमें एक बंदे ने एक बात की थी. उसने कहा था कि जब इंटरनेट आया था 2020 के अंदर, जब कंप्यूटर भी यूज़ करते थे लोग, तो मोबाइल फ़ोन पे आया था, तो लोग बहुत परेशान हो गए थे कि हमारे लेज ऑफ हो जाएंगे. बट आई थिंक आपको अपने स्किल सेट को टाइम बाय टाइम अपडेट करना चाहिए. अगर आप नहीं कर पाते तो आई थिंक मार्केट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये रेस है बहुत बड़ी. और आई थिंक कि अगर आप अपना स्किल सेट जितना इन्हांस नहीं करेंगे, आपको उतना नुकसान होगा. बट येस, डिग्रीज़ की थोड़ी सी वर्थ कम होती जा रही है और स्किल सेट की वर्थ ज़्यादा होती जा रही है. बिकॉज अगर एक इंडस्ट्री के अंदर आपने आना है, तो आपको एक स्पेसिफिक आपको सिर्फ डिग्री लेके आप नहीं जॉब मिल सकती, आपको आपकी स्किल सेट के ऊपर भी जॉब्स वगैरह मिल जाएंगी. और आप देख रहे हो कि जितने हमारे टीनेजर्स हैं वो एडल्ट से ज़्यादा कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं. तो यस. Yeah, due to these new opportunities like e-commerce is there. So it totally depends on your skill set, how you're going to sell something. You don't need a degree for it. Okay, you can take few courses for it and, work on your skills, but you don't actually need to have a degree for it. And people are earning a lot with it. So I think that's very important to know that we need to have the knowledge about AI. Yes. Otherwise, they would be like so behind. And that's all. So coming back to it, as we are salespeople and we are business development people, we have to bring up sales at the end. So what do you think that how the AI is very important for us? It is important for us, we know. It is. But do you think that is it helping us or is it taking our job away from us? वेल, दो पर्सपेक्टिव है इस बात के कि जिनको AI टूल्स यूज़ करने नहीं आते, तो आई थिंक वहाँ पे लेज ऑफ हो सकते हैं कि इसको ये यूज़ नहीं करना आता और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा. बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेस है. जो एम्प्लॉय जितना प्रोडक्टिव होगा, कंपनी उसको ज़्यादा कंसिडर करेगी. तो आई थिंक कि AI टूल्स आपको यूज़ करने आने चाहिए. बिकॉज आप, लेट्स से हमने पहले बात की थी कि एक बंदा 50 लोगों को आउटरीच कर रहा है और आप सेल्स नेविगेटर के ऊपर $50 चार्ज करते हैं पर पर्सन. तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप $20 के अंदर 1000 लोगों को आउटरीच कर पाते हो यूजिंग AI. और उसके जितनी भी एनालिटिक्स हैं और लीड, अच्छा इसमें एक पार्ट आता है लीड जनरेशन का. तो लीड जनरेशन की लीड कितनी क्वालिफाई होनी चाहिए.
तो आपने अपने चैट बॉट को ट्रेन किया हुआ है या उसमें चीज़ें आपने इंटीग्रेट की हुई हैं कि क्यूरीज का रिप्लाई करना है, जो अच्छी क्यूरी होगी, जो अच्छी लीड होगी, वो आप उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो। तो आई बिलीव कि AI अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो आई थिंक आप बाद में जाके मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। I think it's just helping us, not taking our jobs away from. It's just making the work easier for us. Exactly. So that we can save our time and we can put our attention to something that's more important for us. Exactly. And qualifying leads is very important. So it's very, we think that if we're going to bring in 10 people on calls, or if we're going to bring in like 15 people on call, but if the 5 or 6 of them are qualified and rest are unqualified, it's really going to take your time and my time, and it's useless. So I think AI can really help us with a lot of stuff if we know how to use it correctly. Exactly. So it's very important. So yeah, that's all. So that's how we are gonna, let's just say that the role of AI is very, very important especially in our industry and in the tech industry. So yeah, you want to add anything else? Is there anything left? We need to talk about. I believe AI हर इंडस्ट्री के अंदर इम्पॉर्टेंट है। मैं आर्किटेक्चर का स्टूडेंट नहीं हूँ, बट मैंने रिसर्च पेपर्स आर्किटेक्चर के बच्चों के लिखे हुए हैं। मुझे गेम डेवलपमेंट नहीं आती, मुझे कोडिंग नहीं आती। तो आई थिंक जब तक आप चीज़ें ट्राई आउट नहीं करोगे, अभी टाइम है, ये टाइम है जिसके अंदर आप AI के बारे में सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो कोडिंग करना ज़रूरी नहीं है, आपको पैचेस मिल जाते हैं, आप वो पैच ड्रैग एंड ड्रॉप करें और आप यूज़ करें कोड के, बस लॉजिक को समझें कि किस तरह का आप क्या कहते हैं बॉट बनाना चाह रहे हैं। तो आई थिंक कि आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत मैटर करते हैं। तो स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह लेट्स से एक आर्किटेक्चर का बच्चा मैं AI टूल्स की बात कर रहा हूँ कि AI टूल यूज़ करके एक रेंडर बनाता है और वो उसको कितना टाइम लगता है, 5 मिनट्स लगते हैं। लेट्स से मैंने एक पिक्चर ली है और एक खाली ग्रे स्ट्रक्चर की पिक्चर ली है, मैं उसके 20 से 25 रेंडर्स निकाल सकता हूँ यूजिंग AI। वही बच्चा यूज़ कर रहा है, तो मैं उसके 20 रेंडर्स निकाल सकता हूँ No time. विद इन अ मिनट। तो एक बंदा इतना टाइम लगा रहा है, अपना टाइम गलत जगह इन्वेस्ट कर रहा है। तो आई थिंक कि AI यूज़ करके वो बहुत ज़्यादा जो है, जिसके अंदर हम रूम GPT भी यूज़ कर सकते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर वगैरह हैं। तो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस AI का बहुत बड़ा पार्ट है जिसके अंदर हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और हमें खुद जो है, बिकॉज आई बिलीव मैं अभी इस स्टेज पे हूँ कि जहाँ मेरी फैमिली फोर्स कर रही है कि MBA करो, ये करो, मास्टर्स करो। तो आई थिंक, और मैंने डिग्री की भी बैचलर इन बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो आपने देखना होता है कि मार्केट नीड क्या है, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। तो अगर आप MBA कर लेते हो और वो वही सेम पार्ट हो जाएगा कि आप कंपेटिटिव मार्केट के अंदर हर बंदा सेम सर्विसेज दे रहा है। अगर आपके पास डाइवर्स स्किल्स नहीं है तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। Yes, that's completely true. Okay, Ahmed. That's it, I guess. We shared like a lot of good things, and it was quite knowledgeable podcast. And we really talked about a lot of that people out there need to know, especially the new people who are graduating and everything, and new in the market. They need to know about the role of AI and everything. And I think it's very beneficial for them. And thank you so very much for being here today and sharing your insights on it. And I think it was really, really invaluable perspective. So that's very important and very amazing of you to just show up. So yeah, thank you so very much. Thanks, Esha. This is me, Esha, signing off. Bye-bye.